You have earned one more tomorrow by work you did today. So पास्ट में तो बेटा हम जा नहीं सकते, लेकिन अगर हम अपना प्रेजेंट अच्छा करेंगे तो फ्यूचर अपने आप डिसाइड हो जाएगा। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में होगा, कौन से ऑर्बिट में होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा। तो लेट्स सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, the position of the electron is electronic configuration. So we will discuss the Aufbau principle. Aufbau means, Aufbau is the German word building up. Aufbau principle, Aufbau principles means build up. जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले हमें aufbau प्रिंसिपल समझना होगा। तो इन aufbau प्रिंसिपल वी विल डिस्कस सम रूल्स, बोर-बॉरी प्रिंसिपल, N+L रूल। तो लेट्स सी फर्स्ट रूल, N+L। व्हाट इज N? N इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम number of periods 1 2 3 denoted by N, 4 5 6 and 7. This is the principal quantum number. So L is principal quantum number. Explain the size, explain the size and energy, denoted the energy. L is azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number L. N is always greater than L. N is never less than L and N is never equal to L. N और L की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। N की वैल्यू L से कम नहीं हो सकती। N is always greater than L. तो azimuthal quantum number explain the shape. Explain the shape. S orbital is spherical and its L value is 0. P orbital is dumbbell means dumbbell like, and its L value is 1. D orbital is double dumbbell shape, and D orbital is double dumbbell. Its L value is 2. The shape of F orbital is complicated, maybe triple dumbbell, and its L value is 3. So what is the value of L? You have to learn 0, 1, 2 and 3. S orbital, P orbital, D orbital and F orbital. So F orbital is complicated. So let's see N+L rule. What is the N+L rule? According to N+L rule, the electron enter where the N+L value is low.
एंटर कहाँ करेगा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन वहाँ एंटर करेगा जहाँ n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी? लेस होगी, लो होगी, लेस और लो, सबसे कम वैल्यू। तो वी हैव टू fill the electron in increasing order of the energy, increasing order of the energy. Clear? So we have to fill the electron first which have n low n plus l value. Clear? In some cases कभी कभी ऐसा होता है n plus l is same, n plus l is same. So what you have, when electron enter where n value is lower, where n value is lower. So let's see 4s. What is the value of n? N is 4, L is 0. Clear? And 3p, n value is 3 and s value is 1. 2. 4 plus 0 equal to 4, 3 plus 1 equal to 4. So where electron enter? In 3p orbital. The energy of 3p orbital is less than the 4s orbital. So electron fill in p orbital before the 4s. Clear? In 2s and 3s, the value 2 plus 0 equal to 2 and 3 plus 0 equal to 3. So which the lowest n plus l value? 2s. The energy of 2s is decreased than 3s. So electron enter 2s orbital, then 3s orbital, electron enter 3p orbital, then 4s. Clear? What is the n plus l rule? It is also called Bohr-Bury principle. So next rule is Pauli exclusion principle. So what is the Pauli exclusion principle? So according to Pauli exclusion principle, never two electrons have same 4 quantum number. कभी भी दो इलेक्ट्रॉनों का सेम क्वांटम नंबर नहीं होगा. देखो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, according to Pauli exclusion principle, let's see, we take an example of p4. So how to fill p orbital? 1 2 3. How many block here? 1 2 3. So first 1 2 3. This is Hund's rule. We will discuss again after this topic. And 4 electron is, so always when we start the pairing, electrons should be present in different spin. Otherwise there is repulsion. अगर आप ऐसे लिखोगे there is repulsion. This is wrong, this is wrong. So P4, in P4 we can example like 3p4. So what is the value of n? 3. What is the value of L? For p orbital is L 1. Principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number. This is called the magnetic quantum number. Magnetic quantum number. So what is the magnetic quantum number? Magnetic quantum number explain the orientation and how many blocks are present, which explained by magnetic quantum number. So what is the magnetic quantum number? So magnetic quantum number explained by 2l plus 1. So L की वैल्यू कितनी होगी बेटा? यहाँ 1 होगी. 2 into 1 plus 1 equal to 3. There is 3 magnetic quantum number. How to write 3? 0 plus 1 and minus 1.
+1 0 -1, तो px pz py दीज आर डीजनरेट, इन्हें हम बेटा कहते हैं डीजनरेट एनर्जी लेवल। डीजनरेट क्यों कहते हैं? इनकी एनर्जी सेम होती है, दे हैव द सेम एनर्जी, सो दीज आर कॉल्ड डीजनरेट एनर्जी लेवल। तो -1 0 +1, दिस इज द ओरिएंटेशन, हाउ टू मेक द px plus minus, suppose this is the y axis, this is called py, and suppose this is the x axis, and plus minus this is called the px, and above the plane towards you, above the plane plus minus this is called the pz axis. Clear? तो दिस इज डम्बल शेप, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। देर इज टू टाइप्स ऑफ लॉब, इन्हें हम कहते हैं वेव फंक्शन। देर इज टू टाइप ऑफ वेव फंक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द, तो देर इज 3 1 and magnetic quantum number -1 0 +1 -1, and spin for both electron is different. The spin quantum number which explain the +12, and for another electron the spin quantum number is -12. तो Pauli explained that two electron in same orbit can't have same quantum number, and सेम है, L सेम है, MS सेम है, बट स्पिन इज ऑलवेज डिफरेंट, एक क्वांटम नंबर जरूर डिफरेंट होगा। ये किसने बताया था? पाउली ने। समझ में आ गया व्हाट इज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? तो वी कैन टेक एनी एग्जांपल। द p ऑर्बिटल इज डम्बल शेप, दिस इज द p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है बेटा? स्फेरिकल। दिस इज s ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हियर, एंड दिस इज s ऑर्बिटल। क्लियर? d ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी? लेट्स सी द शेप ऑफ द d ऑर्बिटल। तो राइट डाउन दीज पॉइंट्स। व्हाट इज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? d orbitals are x y along the axis, so this is called dx square minus y square along the axis. If lobes are present along the axis, this is called the x and y between the axis. If lobes are present between the axis is called the, this is double dumbbell shape, dx y. One is positive lobe and second is negative. Y and z between the axis, this is called dyz, and dxz, x and z, this is called the dxz. How many d orbital? 5. This is the magnetic quantum number, orientation of the quantum number. So dz orbital is xy lobe present as a ring, and this is called dz square. So d L equal to 2, 2L plus 1, which is equal to 2 into 2 plus 1 equal to 5. How to write the 5? 0 plus 1 plus 2 minus 1 minus 2. dxy, dyz, dz square, dxz, dx square minus y square. How many blocks we have to write? For d orbital, 5. 1, 2, 3, 4, 5. dxz, dyz, dxy,
dx square minus y square and dz square. This is the orbital diagram of d orbital. So xy here is along the axis, this is the between the axis, this is between the axis, here is also between the axis, and dz square is along the axis. So these lobes are present as a, so these are symmetric. D orbital is symmetric and s orbital is also symmetric. D and s orbital is called the symmetric orbital. P orbital is asymmetric orbital. There is plus minus lobe. Here the plus lobe, minus lobe, plus minus lobe, same lobe is present here. So clear? This is called the d orbital. So next rule is Hund's rule of maximum multiplicity. What is the Hund's rule of maximum multiplicity? Third rule we have to follow. Hund's rule of maximum multiplicity. Let's see. Suppose we take an example of d5. So how to write the d5? 1, 2, 3, 4 and 5. There are 5 d orbital and then pairing start d6 ले लेते हैं बेटा, and pairing start from here. If you write like this, 1, 2, 3, 4, 5, this is wrong. So according to Hund's multiplicity, maximum multiplicity plus half, plus half, plus half, plus half and plus half. Then add करेंगे तो आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी. यहाँ plus half minus half cancel, plus half minus half cancel, only plus half is present. So here according to Hund's rule, first of electron distributed one by one. Fill the electron one by one in all degenerate energy orbital, then pairing start. तो until we can't do pair, हम पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन आप फिल नहीं कर दें. तो दिस इज कॉल्ड द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. अब इतने रूल को हमें तीनों रूल को अप्लाई करना पड़ेगा, तब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा सीख सकते हैं. तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको तीनों रूल फॉलो करने होंगे. तो यहाँ मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज़ वेरी इजी मेथड. तो हाउ टू राइट, लेट्स सी. यू हैव टू मेक द टेबल. एक हम छोटी सी टेबल बना लेते हैं. DSP FDSP. ओके, 3 4 4. इससे पहले भी आप बना सकते हो S and P. 4 5 5 5 6 6. There is 4 here. 5 6 7 7. Okay. DSP. अब आप लिखें ऑर्गन. यहाँ आप लिखें नियॉन 10, ऑर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जिनॉन 54 एंड रेडॉन 86. ये सीरीज आपको याद करनी है. लेट्स सी. नियॉन आफ्टर 10 इलेक्ट्रॉन, if atomic number is 10 के बाद बेटा क्या आएगा, 11 to 17. अगर आपका 11 से 17 है तो आपको 3s and 3p फिल करना है. 18 पर ऑर्गन आ जाएगा. 18 के बाद देखिए 19
और यहाँ क्या है 36, 35 एटॉमिक नंबर है, तो आपको ये सीरीज लेनी है। 36 में क्रिप्टॉन आ जाएगा बेटा, 37 to 53 you have to use this series DSP. Now after 54, 55 to 85 there is FDSP series, and here after 87 and so on. After 87 argon, neon, argon, krypton, xenon, radon, these are called the inert gas configuration. Okay, you can write 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, but this method is very long. So this method is very easy to make a table. सबसे पहले आप टेबल बनाएं, then we will take the example one by one. So here we have to follow the n plus l rule. यहाँ n plus l rule देखो, 3 plus 2, 4 plus 0, 4 plus 1. आपको n plus l rule फॉलो करना है. 4 plus 2, 5 plus 0, 5 plus 1, 4 plus 3, 5 plus 2, 6 plus 0, 6 plus 1, 7 plus 1, 7 plus 0, 6 plus 2, 5 plus 3. So this is the n plus l rule. So you have to fill increasing order of n plus l value. If n plus l value is equal, then we have to fill those contain the lowest n value. Those orbit contain 4s and 3d. First we fill 3d, then 3 plus 2 5, sorry, 4 plus 0 is 4 and 4 plus 1 is 5. So first of all we have to fill 4s and then electron enter into d orbital. We can explain the block of those element. Last valence electron in that orbital is called that block. If electron goes s orbital, it is called s block element. If electron goes p orbital, it is called p block element. If last valence electron enter into d orbital, it is called d block element. If last electron enter f orbital is called the lanthanide and actinide series. In f orbital, f block element is called. Clear? So now we take an example of some examples, then we will make this chart. इस chart को बना ले. You can take the screenshot also. Yes. Have you taken? Have you done? So now start. Take an example. 25. How to fill the 25? कैसे फिल करेंगे इस सीरीज से? देखो 25 एटॉमिक नंबर फॉर Mn. ऑर्गन 18 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी फिल्ड. 25 में से आप 18 माइनस कर दो बेटा. 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 15 में से 8, 7. तो यू हैव टू फिल 7 इलेक्ट्रॉन. हाउ टू फिल? 4s इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी आपको याद रखना है. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स in s orbital 2, in p orbital 6, in d orbital 10, in f orbital 14. So you have to learn this maximum electron. Okay, let's see. Mn का कैसे लिखोगे बेटा? ऑर्गन, there is 3d orbital and 4s. 4 plus 1 5, 3 plus 2 5. तो इलेक्ट्रॉन 4 plus 0 4. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ जाएंगे? s orbital. s orbital is fulfilled 2. How many electrons remaining? 5. अब 5 इलेक्ट्रॉन 4p में जाएंगे या 3d में? Tell me. 4p and 3d both have n plus l value is same. Electron goes where n value is low, 3d. So 3d 5, 4s2.
chromium, atomic number is chromium 24, argon 18, 3d and 4s. So you have to write 4s to 3d 4. But 4 plus 2 6 and 18 24, but it is wrong. So you have to write 3d5 4s1 because the d5 orbital is more stable. So you have to write here 3d5, this is very important, and 4s1. 3d5 is more stable than d4. d4 आपको नहीं लिखना, d5 लिखना है. So clear? Then copper, इसी तरह आपको कॉपर का लिखना है बेटा. कॉपर में क्या होगा? अगेन ऑर्गन 29 होता है, 3d 4s2 एंड 3d9. अब इसमें भी देखिए इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जंप कर कर कहाँ जाता है? 3d ऑर्बिटल में. वाई? The energy difference between 3d and 4s orbital is very low, so 3d10 is more stable than d9. So 3d10 is more stable than d9. It's clear? If you have to write the electronic configuration of chromium 3 plus, अब आपको क्रोमियम 3 प्लस या Mn2 प्लस हम बात कर लेते हैं. Mn2 प्लस हाउ टू राइट? अगर आपको Mn2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप 25 में से 2 माइनस नहीं करेंगे. पहले आपको हमेशा ग्राउंड स्टेट में लिखना है. ऑलवेज राइट इन ग्राउंड स्टेट. एटॉमिक नंबर 25 है क्योंकि उससे रॉन्ग होने के चांसेस होंगे अगर आप पहले से ही माइनस कर देंगे. तो Mn2 प्लस का क्या होगा बेटा? Mn2 प्लस का हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ऑर्गन. ठीक है, आपको पहले ग्राउंड स्टेट में लिखना है. अब 3d5 4s2, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 2 5. किसकी एनर्जी कम है? 4s की. तो 4s से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे. 4s आउटर सेल है and d orbital last valence electron enter into d orbital in all cases. These are called the d block element. So how to write the organ 3d5? So Mn2 plus is 3d5. So you have to write like this. This is very simple and easy method. You have to practice. Chromium, copper, in all cases last outermost cell electron enter into d orbital is called the d block elements. It's clear all of you? Now next we can take any example and write, like let's zinc. How to write the zinc? Zn, zinc, the atomic number is 30. Okay, so organ 3d series is very important in class 11th and 12th, both class. Organ 3d and 4s, 2 and 3d 10. 10 plus 2 12, 12 plus 18 is 30. How to write the Zn2 plus? Zn2 plus is more stable. Zn2 plus is more stable because there is 3d10 orbital, fulfilled orbital. Zn2 plus 3d10. Do you know zinc, cadmium, Hg are not a transition element. Not transition element. Not transition elements. Very important question. These are d block element. These are d block element but not the transition element. Why? Zinc, cadmium, Hg are not the transition elements but d block element. Transition elements और d block elements एक ही होते हैं but they difference in their definition. What is the definition? D block elements means when last valence electron, outermost cell electron enter into d orbital is called d block element. But definition of transition elements, those elements
contain in its ground state or in its any stable oxidation state, partially d orbitals is filled. Partially means d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9. Partially d orbital is filled. These are called the transition element. In zinc, Zn2 plus 3d10 fulfilled orbital. कैडमियम का आप निकालें, Hg का निकालें, इन ऑल कंडीशन देयर इज d10 ऑर्बिटल. कैडमियम Hg सभी में आपका d10 ही आएगा. तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये d ऑर्बिटल तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इनकी जो ग्राउंड स्टेट है उसमें भी d ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, इनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें भी d ऑर्बिटल फुलफिल्ड है. But according to transition definition of transition elements, those contain the partially filled d orbitals. Partially filled d orbitals in its ground state or in its any stable oxidation state. Now it's clear how to write the electronic configuration. Then take care and best of luck all of you.